Okay. Position of center of mass of different objects. See, we found the for एक rod का uniform distributed mass का we calculated and non-uniform density also by using integration we calculated 2L/3 आया ना. Now different positions का ऐसा integrate करके solve करके we will get the position of the center of mass of that object. Okay. वो बेसिक ऑब्जेक्ट्स का आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा, नो नीड ऑफ इंटीग्रेशन वगैरह. आपको पोजीशन मालूम हुआ तो आपको कैलकुलेशन इजी हो जाएगा. ओके. सो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. सो व्हाट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट? सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सेमी सर्कुलर रिंग. एक रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग है, उसका So also सेंटर try ऑफ writing again, sir. Position of center of mass of. डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. ओके. एक एक ऑब्जेक्ट का आपको सेंटर ऑफ मास आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा. सो इट इज सपोज सेमी सर्कुलर रिंग का इसका सेंटर ऑफ मास विल लाई फ्रॉम हियर टू YCOM by ऊपर. So YCOM is 2R by pi. YCOM is 2R by pi. Center of mass So lies is the in ring the hollow? हाँ Will the ring be hollow? हाँ रिंग इसमें पूरा खाली है. दैट्स में सम IPA में क्वेश्चन पूछेगा वेदर सेंटर ऑफ मास कंपलसरी बॉडी का अंदर रहेगा और आउटसाइड रहेगा, मींस आउटसाइड रहेगा. रिंग में देखो आउटसाइड है ना. एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सेमी सर्कुलर डिस्क. डिस्क का 4R कैसा by रहेगा? 3 pi. 4R/3 pi. 4R/3 pi. So disk is basically a solid semicircle. 2 डायमेंशन वाला राइट. इसको डिस्क नॉर्मल हमारा कंप्यूटर में लगाते हैं ना, CD लगाते हैं ना, CD का आधा किया तो डिस्क है. So when they just give a semicircle, which one should we use? सेमी सर्किल बोल तो आपको मतलब दे विल मेंशन रिंग बोल के मेंशन करेगा, डिस्क बोल के मेंशन करेगा, ऐसा नहीं है. इवन मोमेंट ऑफ इनर्शिया आल्सो दे आस्क राइट. डिस्क का, रिंग का, सेपरेट सेपरेट दे आस्क. ओके. सम मोर शेप्स आर देयर. हो गया. हाँ ले लो. हेमिस्फेरिकल शेल, द सेंटर ऑफ मास विल बी R/2 and solid hemisphere 3R/8 and solid cone H/4. hollow cone is H/3. ये वाला आपको लर्न करना पड़ेगा, देन ओनली आपको क्वेश्चंस में इजी हो जाएगा. मतलब whenever they given solid sphere, आपको you can treat one point mass only. I can treat the point mass is at one point mass है इधर से कितना दूर में है, 3R/8 डिस्टेंस दूर में इट इज देयर बोल के यू कैन ट्रीट. मतलब वी कैन रिप्लेस दैट ऑब्जेक्ट विथ पॉइंट मास, सेंटर ऑफ मास का. So all of these are YCM, right? हाँ All of these हाँ are Y. यस वैसे ऊपर ही रहेगा कोऑर्डिनेट्स में. ओके. चलो आया. ये आपको टेबल आपको बहुत बैड करना पड़ेगा. ये टेबल आपको बार बार बैड करो देन ओनली विल गेट. ओके. चलो नेक्स्ट. ए रिंग एंड ए पार्टिकल ऑफ मास 2m. ए रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग इज गिवन, इसका मास इज 2m एंड इसका एक पॉइंट मास है, इसका मास इज m. ओके. इज केप्ट एट ए शोन फिगर सच दैट सेंटर ऑफ मास ऑफ द कॉम्बिनेशन लाइज एट द ओरिजिन. दोनों को सेंटर ऑफ मास लाइज एट द ओरिजिन. देन find the value of x. Find x. ये x is how much? If the center of mass lies at origin, दोनों का center of mass lies at origin, find the value of x. So if you know the coordinates, then only you can calculate the center of mass, right? x axis में x ही रहेगा ना आपको, x c1 फाइंड करने का. So do we take minus sign also? हाँ यस लेना पड़ेगा. ऑरिजिन दिया ना, ऑरिजिन से इस तरफ पहले माइनस.
मानो इसका सेमी सर्किल का सेंटर ऑफ मास कितना दूर में है इधर से इधर तक? वाइट 4R. हाँ यस, ये सेमी सर्किल का इधर से इधर तक कितना होगा? 2r by pi, right? ring, sir, is it a ring or is it a Ring disc? only, it all ring, right? Oh, Ring oh, is 2r by pi. Okay, so that is the center of mass. मतलब इसको निकाल सकते हैं, निकाल के you can treat that as one particle. उसका मास है 2m. मतलब you have two particles are there. One particle is 2m and other particle is m. इसका कोऑर्डिनेट्स कितना होगा? ये ऑरिजिन है ना 0,0, इसका इस तरफ वाला -2r by pi, 0 एंड इसका कोऑर्डिनेट्स कितना होगा? x, minus 2 pi by r, right? 2 pi by sorry 2r by pi. Oh, yeah, sir. Okay, नो सब्सक्राइब करो. नाउ यूज द फॉर्मूला XCOM का फॉर्मूला, m1 x1 plus m2 x2 by m1 plus m2. So I got 4r by pi. 4r by pi is answer. XCOM is m1 x1 plus m2 x2 by m1 plus m2. Yes, sir. I got it. 4r by pi is answer. Yeah. Next. Now center of mass of the remaining part का suppose मान लो you have, देखो suppose you have complete area ऐसा है, एक डिस्क होने दो मान लो सर्कुलर डिस्क से. ओके, उसमें से इसका एरिया को मान लो A1 इज अ कंप्लीट एरिया, याद रखो कंप्लीट एरिया ना. उसमें से मैं छोटा सा पार्ट कट करे तो सेंटर ऑफ मास विल शिफ्ट और नॉट? इसका सेंटर ऑफ मास इनिशियली एट सेंटर, राइट? Yeah, I'll change as you're reducing the area. Yes, when I cut the small circle here, definitely center of mass will shift उसका ऑब्जेक्ट. They will ask what is the center of mass of the new position, कितना होगा, वो वाला we have to find new center of mass का. इसका area is area A2. This is removed part, removed area. तो याद रखो, this is the A1 is the complete area you should take, not half area. ऐसा नहीं है. A वाला is nothing but complete area. Like before कितना था वो पूरा लेने का एरिया. ओके ओके, नाउ इसका सेंटर ऑफ मास कितना है पूछे तो व्हाट इज द XCOM का फॉर्मूला विल बी, एरिया टर्म्स में बोलने का, A1 x1 minus A2 x2 by A1 minus A1 x1. ओके, A1 x1 minus A2 x2 by A1 minus A2. This is the formula. A1 x1 minus A2 x2 by A1 minus A2. And YCOM will be A1 y1 minus A2 y2 by A1 minus A2. And x1 x2 are the distance of center of mass from the from A1 and A2. Okay, you can So take if any you're origin, adding right? shape, if you're adding a shape, एडिंग मीन्स आपको क्या करने का, प्लेस करना पड़ेगा, फिर से okay, प्लेस करना पड़ेगा. ओके, सो इधर लिखो, बाजू में लिखो x1 x2, लिखो x1 x2 और डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास और डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास x1 and x2 or the distance of center of mass of A1 and A2 from any origin. So हम लोग origin लेगा ना, origin से distance only we should take. x1 x2 distance क्या है? Okay, चलो क्वेश्चन के थ्रू विल अंडरस्टैंड कैसे लेने का, क्या लेने का. ओके ओके डन. सो इसका समटाइम्स मासेस में आल्सो आई विल शो यू, मासेस में भी रह सकते हैं. देखो we know this form, right? A1 x1 minus A2 x2 by A1 x2. In terms of masses में also m1 x1 minus m2 x2 by m1 minus m2 ऐसा रहेगा.
इवन आर टर्म्स में m1 r1 minus m2 r2 by m1 minus m2. These all are removed part wala. In terms of masses also you have to write this. Sometimes quantity दे लीजिए masses में use करना पड़ेगा. So m1 m2 are the m1 is nothing but the total mass का of the before removed wala. m2 is the after removed part wala. So x1 y1 is the center of mass of the complete part, center of mass of the complete area का, मतलब ऐसा origin ले सकते something ले सकते हैं. And removed part का center of mass will be the x2 y2 normally, right? चलो. Now So we'll M1 will be the total mass and M2 will be the removed mass, right? yes, removed mass. Okay. चलो. ये वगैरह करेंगे. Understand. Suppose find the position of center of mass of the uniform lamina shown in figure. If the small disc of radius a by 2 is cut from the disc of radius a. एक बड़ा डिस्क है, उसका रेडियस इज a. उसमें से मैं एक स्मॉल रेडियस a by 2 का डिस्क का रिमूविंग. ओके. नाउ इज आस्किंग फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. पोजीशन न्यू पोजीशन किधर है सेंटर ऑफ मास का. ओके. सो व्हेनेवर यू वांट टू फाइंड पोजीशन आपको कोऑर्डिनेट्स चाहिए ना, कोऑर्डिनेट्स. सो आपको इनिशियल कोऑर्डिनेट्स कितना है, सेंटर ऑफ मास ऑफ द कंप्लीट बॉडी का ऑरिजिन इधर ले रहा हूं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इज ऑरिजिन. एंड इसका न्यू कोऑर्डिनेट्स का x2 y2 रिमूव पार्ट का कोऑर्डिनेट्स विल बी x2 y2, राइट. x2 इज हाउ मच, इधर से ऑरिजिन से कितना दूर है, a/2, 0. इधर टू कोऑर्डिनेट्स खत्म, यूज करो. आपको a1 x1 minus a2 x2 by a1 minus a2, that is the new center of mass, and a1 y1 minus a2 y2 by a1 minus a2 is the new coordinates. फाइंड करो. a1 कितना है, a1 is complete area का एरिया, सर्किल का एरिया pi a square, and a2 is Sir, minus a by 6. minus a by 6, correct. pi a square by 4. हाँ, नो यूज करो. YCM तो नहीं रहेगा ना, YCM will be 0. A by 2 only, right? हाँ, x2 is a by 2. So XCOM will be removed part का formula is a1 x1. So a1 into 0 minus a2 x2. a2 is pi a square by 4 into a by 2 by a1 minus a2. Pi a square minus pi a square by 4. Solve करो, you get the answer. Yeah, sir, minus A by 6. So minus a by 6 आएगा. So answer is minus a by 6 comma 0 will be the new center of mass का position. Okay. So उसमें remove करो बोल तो minus करो, add करो बोल तो you got to add. Okay. now करेगा. So always coordinates मालूम है ना, x1 y1 is the total area का center of mass, x2 y2 का removed part का center of mass. Okay. चलो नहीं करो. Uniform disc of radius r है, from which whole of radius r by 2 has been cut out from the left of the center. इधर से r by 2 वाला निकाल दिया, and placed the right side the center of the disc. ये निकाल के again right side लगा दिया. So asking find the resultant center of mass of the resultant disc. So sir, initial is R and the final one is R by 2, right? Initial is r. This is removed part means remove करने का, addition means add करने का. यही remove करके we are putting there. So initially 0, 0 we are taking it. Is x axis, right?
So this will be minus r by 2 comma 0, r by 2 comma 0, 0 comma 0. So what is the formula to use? XCOM is a1 x1 माइनस a2 x2. ये वाला क्या है, रिमूव कर दिया, प्लस फिर से निकाल के मैं ऐड किया ना उसको, प्लस a3 x3 बाई a1 माइनस a2 प्लस a3. निकलो. Sir, so A1 will be pi r square only, right? हाँ, a1 is pi r square, yes. And then the Sir, I x1 got is minus minus r by r by 2. कितना आंसर? I got minus r by 4. माइनस r by 4 कॉमा 0 ना? Yeah. नहीं, थोड़ा रॉन्ग है. So what is the area of A3? Pi r square by 4 only, right? हाँ, सेम. Sir, कितना? pi r by 3. Sorry, pi sorry, r r by 3. r by 3 नो. I got r by 4. हाँ, r by 4 आएगा, माइनस नहीं आएगा. r by 4, r by 4 कॉमा 0 इज आंसर. Sir, 1 second. So what's the answer? I got minus 3r by 8. नो, r by 4 आएगा. Sir, wait, sir. A1 minus A2 plus A3 will be pi r square only, right? a1 is pi r square, a2 is pi r square by 4, a3 also A2 pi r square by 4. Oh my god. So Sir, I'm getting r by 8. No, wrong. I'm getting 3r by 16. No, wrong. 1 second. Sir, wait, sir. Won't it be pi r square into minus r by 2 minus pi r square by 4 into 0 plus pi r square by 4 into नहीं, r by 2? see, a1 is how much? बड़ा area, right? बड़ा area is pi r pi r square. square into x1 is 0. Pi r square into 0. Because So I a2 took it as what? see, a1 is always complete area. Yeah. X1 is origin, right? You're taking origin. Origin से only So I took x1 as minus r by 2. x1 is r by 2. नहीं, then you're taking the area of बड़ा ना छोटा ना. Oh, हाँ, so किसका coordinates है उसका यूज करने का, उसका area उसका coordinates. so okay, sir. Then 1 second. So is it r by 4? हाँ, So is it r by 4? yes, r by 4 comma 0. आया कुछ आपको? I got, yeah. अरे, okay, चलो. Okay, एक JEE मेंस क्वेश्चन है, करो देखते हैं. Have you options? Right. 2019. So can I, sir, what's the DNC coordinates? Yeah, sir, 1 second, 1 second, 1 second.
So what will be the removed area of the triangle? That will I'm not getting. I mean rectangle. रिमूव एरिया कितना लिया, कितना ये साइज कितना दिया a/2, ये साइज कितना दिया b/2, तो उतना रिमूव कर दिया, उतना साइड का रिमूव कर दिया। सी ईयर से इधर तक लेंथ इज ए राइट, उसमें से Yeah. आधा पार्ट ओनली रिमूव, आधा पार्ट रिमूव, एंड इधर से कंप्लीट बी उसमें से आधा रिमूव किया। So area of the removed will be a/2 I into don't know. b/2. B. आई डोंट नो, Sir, You tell. option B. ऑप्शन बी है, देखेंगे। This is the question they given JEE means, you try, otherwise I tell. Sir, what do I? Oh, 1 second. Sir, what will I take x1 and x2 as? x1 is how much, tell me, x1 y1 बोलो। Original area, right? Original area का coordinates will be right. So where will be the center of mass? Original area का center of mass? 0, no. That is x1 y1. x2 y2 will be the उसका coordinates will be there. कौन सा removed part का center of mass का coordinates? Origin से कितना दूर है center of mass का, वो coordinates यूज करो removed part का। See, removed part का this is origin, right? इसका coordinates आ गया। Yeah. हाँ, रिमूव पार्ट का सेंटर ऑफ मास इधर है ना, इसका कोऑर्डिनेट्स कितना होगा? ऑरिजिन से कितना दूर जाने का, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में कितना? a/2 and b/2. नंबर दैट ओनली कोऑर्डिनेट्स राइट, x1 y1 करो। So I got option A. हाउ मच? I got A. ए, But I still don't okay. understand what I should take x1 and x2 and y1 and y2 as. See, x1 y1 ऑलवेज बड़ा एरिया का सेंटर ऑफ मास, यूनिट टोल कितना है, बड़ा एरिया का सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट्स क्या है? So, but we have to find that, right? क्वेश्चन का व्हाट इज सेलिंग, आपको रिमूव करने के बाद सेंटर ऑफ मास वी हैव टू फाइंड। सी यू टेल मी Okay. हियर बिफोर क्वेश्चन में और क्वेश्चन में इनिशियल बड़ा एरिया का सेंटर ऑफ मास का ऑर्डिनेट्स क्या लिया? टेल मी। Oh, origin. दिस इज ऑरिजिन मींस x1 इज हाउ मच, y1 इज हाउ मच? 0, both are 0. खत्म, आ गया ना, x1 y1 आ गया ना। नाउ x2 y2 क्या लेने का, रिमूव्ड पार्ट का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट्स, रिमूव्ड पार्ट का सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट्स Oh my God, sir, I'm dumb. Sir, I got it. हाँ, So I'm getting as minus a by 6 and minus b by 6. ऑप्शन में नहीं है। सो आंसर इज आपको प्रणव कितना था, ए है ना? So I got A. यू गॉट ए, ओके। Yeah. So answer is wrong. Correct.
5a by 12, 5b by 12. So can you solve it once? What is the area? Tell me total area is how much? AB. AB. इसका एरिया कितना होगा? AB by 4. AB by 4. खत्म. इसका कोऑर्डिनेट्स, इनिशियल कोऑर्डिनेट्स इज Correct. It's the same thing. Sir, x1 equal to y1 equal to 0. x2 Okay. is a by देखो, 2 and y2 is b by 2. इधर क्या मिस्टेक नहीं है. देखो ये क्या मिस्टेक किया हम लोग. दिस इज ऑरिजिन राइट. इधर से कैलकुलेट कर रहे हैं ना. सो ऑलरेडी दे दिया ना कोऑर्डिनेट्स. सो उधर इधर जीरो नहीं रहेगा. इधर कोऑर्डिनेट्स क्या रहेगा? इसका बड़ा एरिया का कोऑर्डिनेट्स क्या रहेगा? बिकॉज फ्रॉम ऑरिजिन ही हैज गिवन इट. इधर से कैलकुलेट करो बोल रहे ना. सो कितना दूर है? टेल मी इधर से. a by 2 कामा. देखो इधर से इधर तक x में कितना है कोऑर्डिनेट्स? a by 2 राइट. इधर से इधर तक b by 2. इसका भी कोऑर्डिनेट्स a by 2 कॉमा b by 2 ओनली. नो सॉल्व करो. इसका रिमूव पार्ट का कितना रहेगा? दिस सिंस दिस इज ऑरिजिन, रिमूव पार्ट का कोऑर्डिनेट्स विल बी हाउ मच? a by 2 प्लस a by 2 राइट. कितना रहेगा इधर? x कोऑर्डिनेट क्या है, y कोऑर्डिनेट क्या होगा? हां It won't be a by 4. हां a प्लस कितना होगा? 3a by 4 आया ना. Yeah. हां सिमिलरली इसका 3b by 4. Yeah. हां नाउ यूज करो सब्स्टिट्यूट. Yes, sir. I got Since 2A he by has 3. given origin, ये यही बोल दिया ना, origin 0,0 ले रहा हूँ. इधर से coordinates find करने का always. That's Yes, why sir. any Yes, sir. हाँ 2A by 3. हाँ yes. आंसर कितना है? 2a by 3 आया. Yes, sir. When I No. did that. आपको देखो देन आपको क्या होगा? Sir, टेल how में did you एक get का 3a by 4 and 3b by 4? देखो ये इधर से इधर डिस्टेंस कितना है? That's a by 2. हाँ a by 2 का आधा. A by 4. हाँ so a by 4 plus a by 2 is how much? हाँ this a by 2 right. Okay. हाँ so now substitute. देखो a1 x1 is a by 2 minus a2 x2. a2 is ab by 4 into x2. x2 is 3a by 4 by a1 minus a2. So ab minus ab by 4. Now solve करो. You get the answer. Yes, sir. You get A square B by 8 by 3AB by 4. a square b by a square b by 2 minus 3a square b by 16 right. Oh, 16. और वो मिस्टेक क्या होगा? Yes, sir. Because got it. ab हाँ by 3ab by 4. So पूरा ab कैंसिल करो. So कितना होगा? a by 2 minus 3ab कैंसिल होगा. 3a by 16 by 3 by 4. So LCM आता है ना? कैलकुलेट Yeah, करो. 5 by 2 and 5 by, yeah, I got it. Yes. So JEE main question. RG. That's why x1, x2 always we have to take distance from the respective origin. Origin can be anything, anywhere respective. So Then उसका only respective only we have x1 and y1 as the origin, so I took that. if they don't give any coordinates, you can take x1, y1 in that में. उसके respect में we are calculating the center of mass. So always center of mass calculate करने समय origin is important. From where you are calculating. From here some distance. From here somewhere distance हो सकते हैं. So origin is very very important point. They will mention ऐसे questions में they will mention origin किधर लेने का बोल के. चलो. Understood right? Now we'll go for a new topic, motion of center of mass. ये motion of center of mass हो गया तो पूरा आपको ये आएगा. कौन सा? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही आएगा, कुछ नहीं. मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में थोड़ा आपको अंडरस्टैंड होने का फॉर्मूला तो इजी है. सो व्हाट इज एक्ससीएम का फॉर्मूला? यू नो राइट, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का. तो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में ये फॉर्मूला है. देखो यू ऑलरेडी नो द फॉर्मूला राइट. m1 r1 plus m2 r2 plus m3 r3 by m1 plus m2 m2. इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या होगा? वेलोसिटी आएगा m1 v1 plus m2 v2 plus m3 v3 by. एंड इसको डिफरेंशिएट किया तो विल गेट एक्सीलरेशन. खलास, सिंपल. This is motion of center of mass of the system of particles means अभी तक क्या है? Suppose m1 m2 m3 is there, all at rest में, all at rest. But now m1 is moving, m2 is moving, m3 is moving means center of mass will also will move right. उसका center of mass का velocity कितना पूछेगा? You have to use this formula, velocity. समझ में आया?
ओके डन चलो सो अंडरस्टूड फॉर्मूला अगर एक्सेलरेशन का पार्टिकल पूछे तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज करो वेलोसिटी बोलते वेलोसिटी यूज करो आ जाएगा फॉर्मूला सेम दिस इज मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कुछ नहीं ओके नाउ देखो अभी तक जनरली हम लोग देखो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में सिंगल पार्टिकल तो वेलोसिटी कैलकुलेट करता था बट आपको यू नो मेनी पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी इज नथिंग बट सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का पार्टिकल है मतलब आपको इंपॉर्टेंस समझो वेलोसिटी ऑफ सिंगल पार्टिकल वी फाइंड करता था बट इधर क्या करता था वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वी वुड कैलकुलेट similarly acceleration a for single particle double particle ka center of mass all center of mass ka only we should calculate because it has many particles are moving with some velocity so what is the momentum पूछेगा momentum is mass into velocity किसका velocity कौन सा particle का velocity center of mass का velocity only we have to take all case में f equal to ma पूछेगा किसका बहुत सारे particles का acceleration is there acceleration of center of mass find करके f equal to ma लगा खत्म so acceleration of का मतलब center of mass का concept ये वाला बहुत useful होगा on the videos no क्या So can you go back for 1 second? yeah So can't I just directly write it as sigma mr by नहीं again don't use summation mr sigma plus summation same formula है ना before we studied it same formula उसको differentiate कर रहे हो खत्म हो जाए yes sir, I'm done. yeah so ये समझ में है ना एक्सटर्नल फोर्स कभी कोई भी होने दो एम ए सेंटर ऑफ मास यूज करेंगे चलो नो क्वेश्चन के थ्रू वी विल लर्न हाउ द सेंटर ऑफ मास कुछ नहीं पार्टिकल्स आर मूविंग इधर इधर उधर उसका सेंटर ऑफ मास का कितना है कैसे है? चलो करो two particles of masses 2 kg 4 kg are approaching towards each other with an acceleration of two particle is there 2 kg particle and 4 kg particle are approaching each other this is 1 meters per second square acceleration is given this is 2 meters per second square roughly on a horizontal surface okay horizontal surface से आ रहा है then find the acceleration of center of mass So in you the have to system. put sign convention, right? Yes, sign convention लगाना पड़ेगा compulsory because vector quantity is all. So definitely these particles are moving means acceleration also center of mass also will move, right? So -1. Yes, -1 meters per second square. minus आया ना प्रणव आपको m1 a1 oh plus yeah m2 a2 yeah sir -1 a2 वाला में आपको -2 लगाने का right? so sir it's -1 towards the left right center of mass is moving acceleration with the -1 meters per second square से okay देखो सेंटर ऑफ मास इधर नहीं दिखाई नहीं देगा फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है मतलब मूव करने समय वो सेंटर ऑफ मास विल शिफ्ट विद सम एक्सेलरेशन ओके करो ये टू इंक्लाइन प्लेन में है ये 30 डिग्री से ये 60 डिग्री में है ओके इट इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप सरफेस से रिलीज कर दिया फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन का चाहिए इसका So won't the acceleration just be g sin theta? And g यस cos theta? जी यस बिकॉज नेट फोर्स में नेट मास राइट इसका एक्सेलरेशन आप कैलकुलेट करो इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो उसका सेंटर ऑफ मास का फाइंड करो एंड आंसर आई वांट इन आई कैप जे कैप में So you have to do g cos theta also, right? दिस इज एक्स एक्सिस ले लो ये वाई एक्सिस ले लो कंपोनेंट्स का so first don't we have to take the g components and then multiply it by cos and sin नहीं इंक्लाइन प्लेन में व्हाट आई टोल्ड ऑलवेज टेक जी sin थीटा जी cos थीटा राइट लाइक mg sin थीटा mg cos थीटा सो नेट फोर्स में नेट मास इज नथिंग बट जी sin थीटा ओनली एंड इधर भी जी sin थीटा दैट ओनली यूज करो इट okay सो एक्सेल ए एंड बी मान लो एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना होगा जी sin G 30 by yeah 30 आई कैप x डायरेक्शन like सो ए बी विल बी जी sin G 60 j कैप नो यूज करो सॉल्व करो by- So g by 2 I cap g root 3 by 2 j cap. नो रॉन्ग मतलब 30 में भी 1/2 आएगा ना 60 में भी आएगा ना √3/2 सो 2 और भी ऐड हो जाएगा नीचे सो So 4 what आएगा about g cos theta? Oh,
G Okay. cos theta q acceleration, whether this force is making the acceleration. No. G so जो movement करने वाला acceleration only we should take. So G by 4 and हाँ root 3 G by 4. हाँ J cap, G by 4 I cap plus root 3 J by 4 J cap. Sir, I got the G component as G into 1 plus root 3 by 8. 8 नहीं है भाई, कैसे आएगा टेल में? व्हाट इज G फॉर्मूला? by 4 and root 3 G by 4. 4 आएगा, बिकॉज आपको नीचे क्या है, m1 प्लस m2 है ना पूरा फॉर्मूला में. देखो फॉर्मूला में m1 प्लस m2 प्लस m3 है. दोनों मासेस कितना था? दोनों मासेस 2m. हाँ 2m, नीचे 2 आएगा, सो इधर भी 2 आएगा. रूट 1/2 रूट 3/2. सो Oh my god, sir. Yeah, sir. G into 1 plus root 3 by 4. यस. समझ आ रहा है? Oh, it's actually okay. चलो ये करो. So then for y, it'll be, I mean, oh, never mind, nothing. Sir, yeah, so then what will be the y? With the coordinates? Acceleration of the center of mass. We are not calculating the distance नहीं है. Oh, We are yeah. finding alright. acceleration. हाँ. Now पुली है, fixed है, m1 m2 is there. ये acceleration m2 is, मान लो m2 is greater than m1, m2 का acceleration downward जा रहा है, m1 का acceleration ऊपर जा रहा है. Frictionless है. He is telling to take downward acceleration as positive and upward acceleration as negative. He is asking find the acceleration of center of mass. इस particle का center of mass का acceleration है what? करो. So acceleration of center of mass का फॉर्मूला मालूम है ना? Sir, M2 minus M1 by M1 plus M2. बेसिक फॉर्मूला. दोनों पार्टिकल्स हैं, डिफरेंट पार्टिकल्स हैं ना. m2 दोनों का एक्सलेशन a1 राइट. m1 a1 प्लस m2 a2 बाई m1 प्लस m2. So won't it be minus? भाई सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला में है ना. No, व्हाट इज द sir, फॉर्मूला? be minus because we're taking the हाँ यस upward, यस upward. करेक्ट करेक्ट. सो m1 का अपवर्ड का ही टोल्ड टू टेक द नेगेटिव राइट. सो m2 माइनस m2 minus m1 times of a. Okay, but acceleration you know how to find, right? What is the formula? Shortcut मालूम है ना? Substitute करो. याद है whenever particle is going downwards, upwards. So, sir, I have to substitute that M2 minus in M. this. Substitute करो. What is the formula? m2 minus m1 by m1 plus m2 times g. Say M2 minus M1 whole square by M1 Sir, plus I got M2 whole M2 square. minus M1 whole square. G divided by M1 plus M2. Whole square. Whole square में है ना. हाँ या. तो मैं तो सेंटर ऑफ मास का इजी ओनली, कुछ नहीं है. आपको मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इजी, दैट फॉर्मूला बेस्ड ओनली. अंडरस्टैंड सॉल्व. ओके आया ना आपको भी सुना? Sir, I got M2 minus M1 whole square G. भाई नीचे भी है ना m1 प्लस m2. इसका भी फॉर्मूला मल्टीप्लाई किया तो होल स्क्वायर आएगा ना. समझ आया? इसके ए जगह, ए के जगह में आई एम सब्स्टिट्यूटिंग दिस वन m2 minus m1 by m1 plus m2 into g. So m1 plus m2 into m1 plus m2 whole square only, right? Oh, I forgot to say. Oh, yes, got it. हाँ चलो. हाँ ये करो. Two balls A and B of equal masses. देखो A and B of equal masses रहेगा दोनों में. is throwing upwards only. दोनों upwards throw कर रहे हैं. One is 50 meters per second ground से, other from a height of 40 meters दूर में से. फर्स्ट बॉल इनिशियल स्पीड इज 30 मिनट्स पर सेकंड. देखो ये बॉल इधर से 40 मिनट्स दूर में 30 मिनट्स पर ऊपर थ्रो कर रहा हूँ, 50 मिनट्स पर सेकंड से ऊपर थ्रो कर रहा हूँ. फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द सेंटर ऑफ मास. मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द सेंटर ऑफ मास. देखते करो.
Okay. मेरे ख्याल से मिस्टेक करेगा, करो. Sir, mass is not given. Masses, equal masses. M and M you can take. It'll Not cancel. given. Take as M and M. So can you give options? Given. करो. So what is maximum height formula? U square Right. by 2g or something, right? Yeah, you can use that one. When you are applying equation of motion, आपको center of mass का use करना पड़ेगा. All suppose velocity v means v center of mass, u means u center of mass. ऐसे use करेंगे always. Question understood, right? What is Yeah. the maximum height attained by the center of mass? कितना दूर तक? So I got 100. So I'll give a देखिए. guess. I'm not getting. Second. What formula you use, Mano? Tell me. A So velocity is given. 100. A velocity is given. Tell me. What is the formula? How to What? find the center of mass of the velocity first? M1 v1 plus m2 v2 by m1 plus हाँ. m2. Initial velocity कितना है? Tell me. Calculate करो. So the M1 direction V1. is, oh no, my same You direction. get 40. You got as 40 meters per 40 by second. 2. 40 by 2, right? Why 40 by 2? So because, one second, M80. Oh yeah, 40, yeah. 40 है ना? Okay. Now, and first initial position of center of mass कितना है? Initial position of center of mass. You try to find, because center of mass initially किधर है? We don't, right? So इसका origin ले लो. 0,0. And Will इधर be कितना है? 20. 0,40, right? By C1 will be how much? 20. Yeah. M1 x1 plus M2 x2 by M1 plus M2 यूज करे तो y1 M1 y1 plus M2 y2 by M1 plus M2 किया तो आपको Yeah. ycm रहेगा. मतलब सेंटर ऑफ मास 20 meters में है. Somewhere here है सेंटर मास. Okay. Now maximum height you have to calculate from here. मतलब टोटल कैलकुलेट करने का, राइट? मतलब ये वाला भी ऐड करने का, इधर से भी मैक्सिमम हाइट ऐड करना पड़ेगा, राइट? इधर तो 20 है, फिक्स्ड है. ओके. नाउ टेल मी, इधर से इधर तक मैक्सिमम हाइट कैसा आएगा? वी कैन यूज U Square square by by 2g. v square is equal to u square plus 2as, और ये v तो 0 है, u square by, एंड ये तो g है, ना, माइनस g है ना. सो कितना होगा? h इज इक्वल टू u square by 2g. कितना? सेंटर मास का So u सेंटर मास 1600 का. by सो 20. कितना होगा? हाइट इज, इधर 80. सॉल्व किया था 80 आएगा. इधर से 80 तक मैक्सिमम हाइट जाएगा, बट ग्राउंड से कितना है? 80 plus 20. 100 आंसर. परफेक्ट. आया आपको क्वेश्चन? 100 नहीं आया. ओके. So he will combine now all kind of, that's why ये कॉन्सेप्ट, ये लिमिट नहीं है, मतलब ये वाला कभी भी they will combine with सर्कुलर मोशन, they combine To with be honest, this is the hardest chapter. 11th क्लास का सबसे हार्ड चैप्टर इज दिस चैप्टर ओनली. मतलब हार्ड चैप्टर मींस फॉर्मूला तो सेम ओनली, बट क्या है, दोज हु आर गुड इन द प्रीवियस चैप्टर्स आ जाएगा. इजी चैप्टर ओनली, हार्ड नहीं है, इजी है. बट दोज हु डोंट नो काइनेमेटिक्स, डोंट नो सर्कुलर मोशन, कलस हो जाएगा. ओके. मैं देखो थोड़ा कंबाइन करूंगा इधर उधर करके. हो गया कॉपीड? करो. फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास, ये तो मालूम है. आई टोल्ड यू फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास, हाउ टू कैलकुलेट, टेल मी. F इक्वल टू फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास. सपोज एक बॉडी के ऊपर आपको मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग. Mass into acceleration of center of mass. F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. टेक, राइट? फोर्स कैलकुलेट करने के.
And sometimes if they ask acceleration of center of mass, means simply you can write net force by net force upon mass. Net force by net mass. And you can take net mass is m बोलते m capital M. This is the center of mass calculate करो. Sometimes they'll ask like this. Okay, चलो. No, उसके बेस में फोर्स के बेस में ट्राई करेंगे. क्या करो. एक 4 मंकी है. One monkey 1 is 15 kgs. All masses are given. एक monkey is going with 1 meters per second square. 3 meters per second square जा रहे. एक monkey तो रेस्ट है. Other monkey with moving with constant velocity. मतलब acceleration is 0. उसका. तो different acceleration से particles are coming. He is telling, what is telling to find? Calculate the force exerted by the ceiling on the rope. Ceiling on the rope or rope on the ceiling is both are same, all right? So force, मतलब tension force we have to calculate here. So मतलब ये tension force I want to calculate. Since each particles are moving with different acceleration, पहले center of mass का acceleration find करो. Then use the force formula. So for monkey 4, acceleration is 0, right? Yes, acceleration is 0. So And A for center, monkey 3, we have to add, it'll be only 9.8. A वाला भी 0 है, A वाला 0 A 0 है. ये तो 3 दिया है, 1 दिया है. Okay. यूज करो. M1 A1 A center of mass find करो. M1 A1 plus M2 A2 plus M3 A3 plus M4 A4 by M1 plus M2 plus M3. So I got 6 by 10. कौन सा acceleration? हाँ? Yeah, the total system. How much Six. answer you got? Krishna? You want answer? Huh? Getting 9 by 10. Acceleration, not Yeah, sir, even I'm getting 0.9 only. No, wrong. 6 by 10 is answer. M1 No, sir. A1 15 0.9 into is 1. the acceleration of center of mass. Huh? Acceleration of center of mass, I got 9 by 10. Acceleration center of mass only. Answer is given as 6 by 10, not 9 by 10. Oh, Why? so Because 15, so 15 Up plus 75 divided by to 100, right? yes, ऐड करने का. Okay. 90 by 100. So 90 by 100. Yes, correct only. 0.9. That is right. Yeah. 9 by 10. Correct. वो wrong दिया था question. Next. ये क्वेश्चन में कुछ चेंज किया क्या? Monkey 2 is 2 kg is going downwards with acceleration. Monkey 3 is rest. Monkey 4 is moving downwards. All downwards only, right? Okay. Yeah. देखो monkey 1 15 kg is going upwards बोल के दिया 15 kg, but छोड़ो 9 down arrow दे दिया ना. 9 by 10 वो So, क्वेश्चन में कर दिया, but arrows it can be 6 by 10 because they said upwards, right? So upwards direction will वही है change. क्वेश्चन में, but yeah 6 by 10 actually answer 6 by 10 Yeah. करो. समझ में आया कृष्णा? देखो क्वेश्चन में monkey 1 of 15 kgs is going upwards with acceleration बोला. This is the figure, Diagram why तो did उसे you see the उल्टा दिया. direction down, sir? So above रहेगा actually. That's why 6 by 10. So acceleration of center of mass you got a 6 by 10. मतलब 3 by Sir, answer is 60. I mean, sir, I took G doesn't even matter. Yeah. So look at 60, right? Force. no wrong. Sir, how's the net mass? Net mass is 100, right? 100 into See, 3 by 5. these all are moving with मतलब you treat as now innately what is there? Tell me. एक particle है of mass some m मान लो. Particle is moving with acceleration how much? 3 by 5. And either tension is acting down I upwards. got 920. Downwards is mg. 920 yeah? No wrong. So what is the formula? Net force equal ma लगाओ. Net force equal ma. Acceleration जा रहे ना. हाँ कितना? even I'm getting 920. 920 only. Okay. So the net force tell me is a पूरा system मान लो. इसके ऊपर force mg force right? What is the mg force tell me? कितना है total? 980. कितना? 980. 980 yeah? No wrong. Sir, 40 can't- 60. 980 only. So 100 into 9.8. You're taking 9.8 Yes, in the question that you get 9.8 only. Okay ठीक है. इसका mass कितना total? 60 100. 100 खत्म. So what is the formula? Acceleration downwards है ना. So mg minus t net force equal to ma. A center of mass, right?
नो कैलकुलेट करो, ये टेंशन चाहिए, राइट? mg इज नथिंग बट 100,000 So 98. Okay, fine. ओके, हाँ 98 लगाए तो वो आएगा। कितना कितना है आपको? तीनों को सेम आंसर है 980 या So 920. 920. 920 आया ना? यस 320, करेक्ट। yeah. भाई बिकॉज 10 लिया तो इजी हो जाएगा, बट ही सोल्ड So what will 9.8 the tension 9.8। be? The tension Huh? will be the What? tension. Tension only we are calculating, right? 920 Yes, what, yes, right? yes. Yeah. Oh, we have to calculate tension, right? Yeah. Okay. Tension only we are calculating, right? 100 into 9.8 is 98, 980. 980. Yeah, minus Minus 60. Yeah. t is equal to m 3 by 5 into m capital 100, right? So 60, yeah. Yeah. 920 is answer. Sure. So If where? you take 1,000, so if you take 1,000, you'll get 940. 940, yes. चलो ये करो। एक रॉड है ऑफ लेंथ एल है, घूम रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। और देखो सर्कुलर मोशन आ गया। हाउ मच हॉरिजॉन्टल फोर्स डज द शाफ्ट एग्जिट्स ऑन द रॉड? ये वाला क्या है? यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l। इसका मास है m एंड लेंथ l, इज टाइड विद ए वर्टिकल शाफ्ट। ये शाफ्ट है, ये रॉड है। हाउ मच हॉरिजॉन्टल फोर्स डज एग्जिट्स ऑन द रॉड? या इन टर्म्स ऑफ ओमेगा में आएगा आंसर। सो वी कैन नॉट टेक टोटल पार्टिकल्स, राइट? टोटल पार्टिकल सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा ऑलवेज। How much force does the shaft exerts on the rod, or rod exerts on the shaft? So that's about So tension force. acceleration v square by r. Acceleration So v is the square by r. answer is velocity or is omega okay? Omega terms में चाहिए ना? You don't So again don't convert the into rod, velocity. whether it's a uniform rod, so L by 2. हाँ. Okay. So Force is what? mass Half is here, right? Sir, half ml by no, half ml omega square. Yeah, half m omega square L. L. Yeah. Yes. देखो, rod is rotating में nothing but center of mass, right? Different particles we are not calculating. Center of mass का calculate कर रहे हैं. कितना center of mass? Already uniform rod का center of mass is L by 2. Okay. Now मतलब indirectly there is one particle is there of mass m and distance is L by 2. So tension force is acting. So net force is omega, right? So net force towards center is acting like a centripetal force. So net force is T is equal to, what is centripetal force का formula? M R omega square. R is L by 2 omega square, right? So therefore tension is M omega square L by 2 is answer. Net force towards center is always equal to centripetal force. देखो that's why ये वाला सब कुछ आपको चाहिए, you know, करने के लिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। Okay, sir. इसका और भी डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चंस आर देयर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चंस आर देयर, वो भी सॉल्व करने का करेंगे। ओके, ये वाला भी इंपॉर्टेंट, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आ गया तो आपको क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व। ऐसे क्वेश्चंस किया होगा ना, शिप में इधर से इधर तक जा रहे हैं, इधर से इधर तक जा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस किया स्कूल में? किया होगा से Yeah, sir, we did that some board question. वो आ गया आपको? No, sir, I didn't understand that. देखो वेरी इंपॉर्टेंट, ये अंडरस्टैंड हुआ तो वो अंडरस्टैंड होगा। देखो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इफ इनिशियली सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट एंड नेट फोर्स इज 0 है तो क्या होगा? ओके, यू टेल मी नेट एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल 0 सपोज मान लो। कैन यू टेल मी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा? 0. व्हाई? बिकॉज आपको नेट फोर्स बाय नेट मास, राइट, इज 0। If acceleration is 0, can you tell me what is VCOM? Constant. Constant, right? Okay, center of mass is constant. मान लो if initially center of mass is at rest,
if initially center of mass is at rest. Matlab constant means if initially center of mass is at rest, final center of mass will be how much? Final center of mass will be if initially rest में है center of mass. Constant means meaning क्या है? If initially center of mass rest में है तो final also should be rest only. मतलब BCOM final will be how much? 0. So where position velocity. What is meaning of acceleration? Well, force 0 means acceleration 0 always. Acceleration 0 means velocity is always constant. In particular case में if initially center of mass is at rest, okay, in that case में आपको center of mass initially 0 है तो final also 0 रहेगा always center of mass. Okay, that means at that time में can you tell me what formula you have to use? Displacement of center of mass का how to find that time? We know this one, right? Formula. What is the formula? M1 dx1 vector plus M2 dx2 vector is equal to 0. याद है ना center of mass से formula है dx1 वाला d center of mass का वाला that one. Since there is no change in the position of center of mass, we have to use this formula. Very important. M1 dx1 plus M2 dx2 is equal to 0. मतलब वो बोलेगा बोर्ड से इधर जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं. Initially center of mass at rest. When they are moving also, the center of mass will be rest. At the time simply formula use करो M1 dx1 plus M2 dx2 equal to 0. And with sign convention you have to use. Right side positive, left side negative. एक sign convention एक के solve करने का. Final answer आने के बाद we can understand whether the boat will move left side or right side. We can know. Okay. So external force 0 होगा. Suppose example दो masses are there. Initially rest में है. They will come closer with some force which is called gravitational force, right? When I leave, what will happen? Because of mutual attraction forces, gravitational forces, a particle start moving. You tell me center of mass will remain same or not same in this case में? Tell me. Initially मान लो rest में है. Initially rest. Initial rest में. It will be same. Why? Because initially rest में है तो there is no external force. These are internal force. If there is no external force, acceleration will be 0, velocity will be constant. But since initially at rest, center of mass at rest, the finally center of mass also 0 रहेगा. At the time we can use formula M1 dx1 plus M2 dx2 equal to 0. समझ में आ रहा है? प्रणव, understood? Yes, sir. Yes. So इसका क्वेश्चंस करने का आपको ये क्वेश्चंस आ गए तो आपको मैक्सिमम हो जाएगा. आई थिंक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दे रहा पोर्शन में आपका. No, sir. हाँ खत्म. ये हो गया तो क्लास आपका इधर तक पहुंचना है. ओके Yeah. चलो न्यूमेरिकल्स करेंगे. अंडरस्टैंड करो. चलो एक प्लैंक ऑफ मास m एंड लेंथ l. एक प्लैंक है, स्केट बोर्ड मान लो, समथिंग प्लैंक है, रेस्ट में है. ओके इनिशियल रेस्ट, फ्रिक्शनलेस फ्लोर है. द टॉप सरफेस ऑफ द प्लैंक हैज अ फ्रिक्शन. ओके एट वन एंड of a man of mass m is standing as shown in figure. Is standing, small m is standing. So initially center of mass rest है, moving ab rest में, rest में. Okay, at one end of the man of mass m standing. Okay, if the man walks towards the other end, he is walking towards the other end. Find the distance with the plank moves till the man reaches the center of the plank. First case. Second case में till the man reaches at the other end of the plank. He is asking find the distance at which plank moves. You tell me when he is walking, frictionless surface है, definitely this plank will move. इस तरफ जाएगा ना, somewhere इस तरफ जाएगा ना. Okay. Yeah. Now try to find the value of the how much distance the plank will move when he reach first case में a bit में when he reach up to exactly l/2 distance तक गया तो कितना plank distance move करेगा. Okay. चलो. So आपको m by l by 2 capital M plus small m. क्या फॉर्मूला दिया क्या? What's your answers? नहीं you got by मेथड से किया और फॉर्मूलास और Get rest and you'll take it with respect to the plank. yes. So with respect to plank or ground से we are taking the respect, right? See, Sir, suppose I मान have लो the first answer as ml by 2 into small m plus capital M. ml by 2 into yes you got
आपको भी आ गया bro? देखो Sir, सपोज मान three लो, minus ml. ओके मान लो द प्लैंक मूव्स एट a distance x. Sir, Okay. won't until won't the second answer be ml by m plus m? ml by m plus m, yes correct. Yeah, because that endpoint becomes l comma 0, then we can use, yeah. Okay, मान लो the plank is moving with capital X, इस तरफ जा रहा है. Okay, now tell me what is the since initially there is no external force, right? There is no external force, a pure internal force only. They cancel out each other generally. That means initially there is no external force, center of mass is 0, velocity is constant. Since center of mass is 0, the final also center of mass should be 0. That's why what is the formula we have to use? Simply m1 dx1 vector plus m2 dx2 vector equal 0. Okay, so you tell me when he went from here to here, how much distance he traveled? The plank is also moving right side, right? So how much distance it traveled? Tell me. M1 is m into dx1. कितना length travel किया? Tell me. Whether he traveled L by 2 or less than L by 2. Plank is coming backside, right? When he's watching, person is watching from the ground, the plank is coming backside. So definitely less travel किया होगा ना? So क्या करेगा? Tell me. L by 2 minus x. इतना distance travel किया? ये समझ में आया प्रणव? Yeah. From the ground से. Tell me इसका बोलो. M2 capital M into dx2 कितना होगा? ये with respect to ground only, right? Ground के respect में only this one. Ground के respect में it is going left side. So minus x equal 0. So Now why solve can't we karo. just keep the another plank as l comma 0 and we can directly use the formula, right? That's easier. No, always use a particles का always. If 3 particles are there, m3 dx3, 4 particles are m4 dx4. ऐसे use करो, easy हो जाएगा. Okay. हाँ, कितना आएगा? Expand करो अभी. प्रणव. So if we just put the plank at rest, and then if we take everything with respect to the plank, then the movement of the plank with respect to the plank will be 0 anyway. So we'll only have to calculate. Yes, any frame of reference you can, yeah, any frame. But generally questions आपको ground से करो, थोड़ा complicate नहीं होगा. Because sometimes ये दूसरा particle 3-4 particles रहेगा, so problem हो जाएगा. So ground से का respect में we are calculating. So ground के respect में this person is not going on the L by 2 distance because plank भी पीछे आ रहा है ना, so less distance travel करेगा. कितना less distance? L by 2 minus x करना पड़ेगा. ऐसे करो. All method. If you see in books में also you will get the method same in this method. So confuse नहीं होगा. Therefore x का formula you'll get as m in ml by 2 times of m plus capital M. Now second one, he traveled total L नहीं travel करेगा, L minus x travel करेगा. कितना आंसर है प्रोनाउन second one? Sir, I got ml by m plus m. Yes, correct. Now करो. Without copying करो. Now 3 particles are there. Okay. One 10 kg plank is there, 40 kg person is there, 50 kg person is there, and 10 meters है. Okay. Find if both A and B interchange their position. मतलब when he came up to 50 kg person here, 40 kg person here, at that time he is asking find the displacement of the plank. आपको डायरेक्शन लेना पड़ेगा, किस तरफ जाएगा उस तरफ प्लैंक लेना पड़ेगा. ओके, जनरली किस तरफ जाएगा? कॉमन सेंस से बोलो. If 50 kg person is coming like this and 40 kg person is coming like this, प्लैंक किस तरफ जाएगा जनरली? Towards the like away. 50 kg. ऐसे जाएगा ना 50 kg person. x ले लो, x ले लो, सॉल्व करो. विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करो. सो इनिशियली रेस्ट में, so center of mass is at rest, there is no external force. All that's why simply use m1 dx1 plus m2 dx2. ये 3 particles है ना, plus m3 dx3 equal 0. With respect to ground से करने का always. Why we are doing with respect to ground? Because plank is with respect to ground only. एक एक reference नहीं लेने का. So ये वाला भी with respect to ground करने का, ये भी with respect to ground करने का. Here I'm getting 10. First one, wrong. Sir, the B person will move. He's going 10. this तरफ. Yeah. And 10 particles. minus x, right? Huh? It will be 10 minus x, right? The B person. B person is 10 minus x, yeah. And 40 kg person is 10 plus x, right? Yeah. So he's moving like this, and displacement also this one.
and ये वाला 50 का -10 यूज करने का, राइट? इज गोइंग लेफ्ट साइड, राइट? -10 + x ऐसा, और अपोजिट डायरेक्शन में वन डायरेक्शन ले लो पॉजिटिव, वन डायरेक्शन नेगेटिव लेके सॉल्व So करो. first when we find four. the so first when we find the initial center of mass, I got 0.5. Okay, And then when I swapped the position, it'll be x plus L by 2, right? The distance. x plus L by 2. Okay, So then when I solved that, I'm getting answer as 1. 1 is answer. Okay. So I got 4. कितना 4? No, Sir, I'm getting Okay, my okay. Yeah, canceling. got it. देखो 40 into m1 dx, right? 40 into, you are going in this direction, positive I'm taking, so 10 Yeah. plus x plus 50 into ये डायरेक्शन में -10, right? -10 and positive direction में सर plus x plus m3 10 into x3 is like this, right? Positive direction x equal 0. Now solve, find the value of x. Yeah, so got x equal to 1. 10 plus x, right? Capital x equal to 1 you will get. Now second case में A and B move towards each other and finally meet at the middle of the plank. So it'll be just half of it, right? Yes. Yeah, exactly. So won't it just be 0.5? कितना? Won't it just be in the middle? Middle. Yes, correct. समय है? चलो ये कर सकते हैं? Easy question. So two particles masses are placed separation by distance. They move towards each other. Attractive force. At what distance from the initial position of 2m mass the particles collide? So can you give options? No options. In terms of small d में चाहिए answer. So here also an external force नहीं है, center of mass acceleration So नहीं over है. here, sir, x1 will be 0, right? By x1 will be 0. So if I take origin, Okay, you could so I'll take get x1 as 0 and x2 as d. d by 2, right? So They d. collide. Okay. This, this See, is the ये भी मूव हो रहा है भाई, डी तक जाएगा वो. ये भी मूव हो रहा है, ये भी मूव हो रहा है. Somewhere बीच में it will be colliding, right? Somewhere. Sir, I took x and d minus x. Yes, correct. So ये जाके मान लो x distance जाके इधर तक आया 2m. And so then if you take x plus, you'll get 2mx plus 3md minus 3mx. ये So कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा दोनों? d so minus that's x ट्रैवल किया, right? यूज करो नो. Since same m1 dx1 plus m2 dx2 is Sir, equal to but won't it be minus of d minus x? 3md. minus of dmx, that only substitute करो. m1 dx1 plus m2 So you get dx2. x as 3d. No, wrong, थोड़ा wrong. So if is there false, right? So m1 is 2m into dx is x. Sir, I got m2 is 3d by 5. 5. कितना? 3d by 5. 5. Is correct, perfect. So is it minus of d minus x 2, right? D minus x. So what minus of, so why is it minus of d minus x? You are going this 2 and 3m Oh, as yeah, sorry, yeah. खत्म, solve करो. You will get as x Oh, value sorry, as oh my god, I forgot to change the sign. 3 by 5d. Sir, I forgot to change the sign. खत्म. So we have conservation of momentum, and some we will use the concept of center of mass, like some work energy theorem concept use करके, थोड़ा potential energy में some 1-2 numericals करके center of mass का हो जाएगा. Then we are entering into the rotational motion. खत्म. नेक्स्ट क्लास में center of mass system of particles का पूरा done successfully for us.
That's it.